G. Today we are to discuss with the you can say important symbols of the reluctant fundamentalist और ये जो नेचुरली जब आप मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हो मॉडर्न लिटरेचर के हवाले से चीजें देखते हैं तो यू नो वेरी वेल के जो सिंबल्स हैं दैट प्ले पिवटल रोल इनका बड़ा अहम किरदार होता है ये बड़े मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट रोल पर काम करते हैं दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इग्नोर द सिंबल्स and like what we know very well that this is this piece of you can say literature also belongs to the modern and postmodern you can say genre is postmodern particularly I must say it belongs to the postmodern genre so we shall have to we shall have to evaluate all those symbols which have been you can say discussed in the you can say in this novel and more or less when you are going to you can say write down about symbols there is a need to define what symbol is a symbol basically it can be an idea it can be an object which has some other suggestive meaning which has some other you can say implied meaning that is what we call you can say symbols and here in this novel we do also know that there are you can say numerous symbols which have been you can say uh, uh, implied by the writer G. As its initial suggests, Underwood Sampson's the valuation firm Chinga's work for symbolize the US in all of its power, optimism, and under the surface racism. रेशिज्म है तो अंडरवुड सैमसन सबसे बड़ी जो हमारे लिए सिंबल है वो अंडरवुड सैमसन है द वैल्यूएशन फॉर्म चंगेज वर्क्स फॉर जिसमें चंगेज काम करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है उसकी ताकत को रिप्रेजेंट करती है ऑप्टिमिज्म को फिर मटीरियलिज्म को और फिर उसके नीचे जो एक तरह से रेशिज्म मौजूद है ये उसको रिप्रेजेंट करती है जी बेटे At first, Underwood Sampson seems like a perfect metricalism, metrically. खुदाई मतलब हमें नजर आता है कि वहाँ मेरिट पर लोग तैनात होते हैं मेरिट जो है वो दैट्स द की you can say element in Underwood Sampson but feeding its implies a variant of the American dream like if they work hard they'll be rewarded so Underwood Sampson implies travel around the world performing seemingly useful services for its client लेकिन जो ही चंगेज जो है वो क्रिटिकल होता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो देखता है कि फ्लॉज इन द हेल्प एंड वो सैमसंग प्रोवाइड्स फॉर इट्स क्लाइंट्स तो इसमें फ्लॉज नजर आते हैं मतलब जो है इन ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर अ कंपनी तो एक कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए इट हैज टू फायर एम्प्लॉइज इसको एम्प्लॉइज को क्या करना पड़ता है फायर करना पड़ता है सम ऑफ होम विल नेवर होल्ड अ जॉब अगेन उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनको दोबारा कभी भी मतलब जो है वो मुलाजमत नहीं मिलेगी और खास तौर पर 9/11 के बाद वी डू ऑब्जर्व कि ये चीज जो थी वो बड़ी मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट नजर आती है चिंगेज also realizes that Underwood Sampson's meritocracy has limits ये अगर मेरिट पर भी है तो ये लिमिट्स रखती है और कौन सी लिमिट्स इसके अंदर हमें जो है वो नजर आती हैं वो मोर और लेस हम ये इस बात को भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो तमाम लिमिट्स हैं ये जो है वो कि जब वो अपनी मतलब जो वो बियर्ड मतलब जब when he grows his beard he sees his colleagues formerly hidden racism very clearly तो उसके colleagues के अंदर जो है वो उसके हवाले से racism नजर आता है एंड पर he feels द सेम वे अबाउट अमेरिका एंड एडवर्ड सैमसन के उसको अमेरिका और एडवर्ड सैमसन के हवाले से उसको एक जैसे फील होता है दे हैव गुड पीपल बट देयर इंपीरियल मोर हार्म देन गुड तो वो ज्यादा मतलब नुकसान करते हैं एज कंपेयर टू कुछ भलाई करने के जी जी नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास टी जी Chinga's lead the stranger to coffee for a cup of Lahore famous कैफे tea. के अंदर वो उसको लेके जाता है फॉर अ कप ऑफ लाहौर फेमस टी जी Though the stranger initially seemed so paranoid about being poisoned. पॉइजनड वो मतलब सो पैरानॉइड कि वो अपनी जात के अंदर मतलब इस तरह से मदगम नजर आता है गुम नजर आता है अबाउट बीइंग पॉइजन कि शायद उसको जहर ना दे दिया जाए और शायद ये चंगेज को लगता है
और चंगेज switches their cups after the tea is poured. कि वो अपने कप को स्विच कर देता है जो ही वो उसमें मतलब जब वो चाय डालता है वो चेंज कर देता है. तो लेटर व्हेन देयर वेटर ब्रिंग्स देम ग्रीन टी स्ट्रेंजर एक्सेप्ट्स इट मोर रेडिली. तो वो बाद में उसको मतलब जो है वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक तरह से उसका एतमाद बन चुका है. तो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है वो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू ट्रस्ट अनदर पर्सन always hinges upon the exchange of some cultural item. कि जिस तरह से ये अपना खाने की जो प्लेट्स हैं वो चेंज करते हैं, कप ऑफ जो टी है वो चेंज करते हैं. तो इस तरह से ये एक तरह से आप ये अंदाजा करते हैं कि ग्रेजुअली वो लोग जो हैं वो आपस में अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर रहे थे. जी. In the relevant fundamental, the process of learning to trust another person always hinges upon the exchange of some cultural items. A cup of tea, a book, even a line from the movie Top Gun. At the same time, there is an implication in the novel that Changez taking the stranger to tea is a kind of chart. It's carried. कि ये बुनियादी तौर पर जो है वो जब उसको मतलब जो है वो लेकर जाता है कप ऑफ टी के लिए, तो उसके साथ उसका जो अटैचमेंट हमें नजर आ रही है, दैट इज व्हाट वी कैन के यू कैन से कि जिस तरह से ये एक तरह से गेम की तरह से काइंड ऑफ कैरिड एन एफर्ट टू लीड द स्ट्रेंजर इनटू अ काइंड ऑफ ट्रैप इन विच एंगेज द वेटर एंड अदर्स विल एम्बुश द स्ट्रेंजर आफ्टर देयर इंटरेक्शन. कि वो उसको मतलब जो है वो अपनी मर्जी से उस एक ट्रैक में मतलब फंसाना चाह रहे थे, एक तरह से उसके लिए ट्रैप तैयार किया जा रहा था. तो ये चिंगेज का मतलब स्ट्रेंजर को टी के लिए लेके जाना, ये एक तरह से उसका जाल बिछाना था ताकि जो पॉसिबल अटैक है जो चिंगेज प्रोसीड कर रहा था, शायद उसके पास गन है, उस अटैक को भी पॉसिबल अटैक को भी जो है वो रोका जा सके. जी. It is not at all a definitive that this is the case. It is left an open possibility by the novel Cliffhanger ending. तो ये भी हमें नजर आता है कि इट इज नॉट ऑल डेफिनेट. ये मतलब जो है वो सब कुछ डेफिनेट नहीं है. That this in the case that it is left an open possibility by the novel's cliffhanger ending. The question becomes then, can cultural exchange like Chinggis tea time with a stranger build genuine trust between the two different people, or will they always be unsuccessful? कि क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे? जी मतलब जो है वो हमें चीजें मोर और लेस जो है वो नजर आती हैं. जी. Chinggis scar. Chinggis Khan seemed to worry that stranger since it looked like a mark of some violent encounter. But Chinggis insists that that he acquired it as a small child when a candle dripped molten wax on his arm. अच्छा, अब ये एक और Chinggis Khan seems to worry the stranger since it looked like a mark of some violent encounter. उसके मतलब जो है वो निशान था. तो वो जो एक स्कैर का निशान था, वो जो कट का निशान था, वो मतलब जो है वो स्ट्रेंजर को वरी कर देता है. और खास तौर पर ये इस बात की भी अलामत है कि शायद इसका किसी से झगड़ा हुआ हो. बट चंगेज insists that he acquired it as a small child when a candle dripped molten wax on his arm. कि गरम गरम जब वैक्स जो है वो उसके बाजू पे पड़ा तो उसका निशान जो है वो आ गया. तो इट्स आल्सो पॉसिबल ऑफ कोर्स दैट चंगेज इज lying, that he got it more recently during the course of violent opposition to the United States. उसको तब जो है वो ये स्कार, ये कट का निशान जो था वो लगा था. The qualities of scar itself are almost mutually contradictory. It's dark, which traditionally symbolize evil, but also smooth, which traditionally symbolize innocence. ये मतलब डार्क है, ये evil की वजह से है, लेकिन इसमें चंगेज जो है वो quite innocent है. So in this way, the way one interprets Chinggis scar mirrors to the one interprets Chinggis himself. इससे आप Chinggis को भी मतलब जो है वो understand कर सकते हैं. He could be a sinister figure. वो गलत हो सकता है. Who conspires to kill the stranger, कि जो stranger को kill करने के लिए conspiracy करता है. So he could be innocent of all wrongdoing whatsoever, कि वो innocent भी हो सकता है अपनी तमाम wrongdoing में. Or he could be a terrorist who is innocent insofar as the United States, कि वो मतलब टेररिस्ट हो सकता है जो कि इनोसेंट था यूनाइटेड स्टेट्स में और हैज पुश्ड हिम इनटू फंडामेंटलिज्म, तो उसको वापस फंडामेंटलिज्म की तरफ धकेला गया. तो इंटरप्रेटिंग द स्कार इज लाइक एन इंक ब्लॉट टेस्ट
one's interpretation says more about the interpret than about Chengiz. तो ये यहाँ पर आप जितना भी इसके हवाले से मतलब जाएंगे will observe कि ये चीजें जो है वो more हमें जो है वो complications की तरफ लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो more or less जब हम लोग मतलब ये सिंबल, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि चंगेज का करेक्टर इटसेल्फ सिंबॉलिक है, फिर इसी तरह से जिम का करेक्टर सिंबॉलिक है, इस तरह से वेन राइट का करेक्टर, फिर एरका एरका जो है वो टिपिकली रिप्रेजेंट करती है अमेरिका को, अमेरिकन एटीट्यूड को। ये बात हमने मतलब इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन ये हमने देखा था। जिम जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को पसंद करता है, लेकिन एक ऐसे शख्स के तौर पर जो कि इसको चंगेज को पसंद भी करता है। और इसी तरह के साथ चंगेज खुद जो है वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सन के तौर पर हमें नजर आता है, जो कि डिविंडल करता है यू कैन से इसके अंदर गुड एंड बैड एलिमेंट्स के अंदर, और जिस तरह से वो वापस फंडामेंटलिज्म की तरफ